alaikum. Today I'm meeting a young actress who has been shining on screen for some time now. She has tremendous screen presence and चाहे वो main lead करे ना करे, she has this way of drawing your attention towards her. और मैं बहुत दिनों से इनसे बात करना चाह रही थी, हमारी बात भी हो रही थी और फिर मैंने इन्हें बड़ी स्क्रीन पे देखा नायाब में. So I thought what better time than now to talk about her drama experiences, her movie experience, her aspirations. She has a very bright future ahead of her. So please meet Noreen Gulwani. Thank you for meeting me. Thank you for having me and thank you for such a warm introduction. आपको लोग कहते ही होंगे, you do have screen presence. Do people tell you this all the time? Sometimes. After Nayab, I've been hearing it a little more. Yeah. Why do you think after Nayab? I have my conclusions why after Nayab, but you tell me. I guess because एक तो शायद बड़ी स्क्रीन पे पता ज़्यादा चलता है और फिर ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग भी था, हेड स्ट्रॉन्ग था और आई गेस मुझे एक्टिंग भी थोड़ी बहुत आती है. हाँ कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था और कैरेक्टर वेल डेवलप था. ये नहीं था कि बहुत सी फिल्में और ड्रामे ऐसे होते हैं जिसमें भाभी है तो बस वो एक भाभी के डब्बे में डाल के उसकी कोई शेड्स नहीं होते, कोई उसकी फीलिंग्स नहीं होती, बट इट वाज अ वेल डेवलप्ड कैरेक्टर. यू अंडरस्टूड के इस लड़की के क्या व्यू पॉइंट्स हैं एंड कितना वो थक रही है पूरी फैमिली के लिए पका पका के. यूजुअली भाभी इज shown as a character which you kind of like look away from or you look down upon, like they're not taken seriously or respected for what their position in the family. लेकिन here like उमर भाई से जब शुरू में ही बात हुई थी, the director he said कि नहीं, this is not the character, that's not how we will show her. She's very important, she's running the place, she's पढ़ा लिखा, she is opinionated and she's a good character, she will be just towards everybody. ऐसा नहीं है. वो आगे एक point पे like her husband offers her to buy something, अपने लिए खरीद लो, and she's like I don't want it for myself, I just want my child कि वो आगे it's जाए. she's very human. You can connect with her, she's real. तो I think हाँ. नायाब की एक और बात ये थी कि very star studded cast with some veterans, Javed Sheikh, Huma Nawab, a lot of your roles were with them. Then Yumna Zaidi, of course, has been around for much longer than you have. सब आपसे तो ज़्यादा फवाद खान with years and years of experience, Osama Khan also. So you were probably one of the newer actors in the main cast, but still you held your own. I told you this also, okay, you held your own. अंदर से I've been dreaming and prepping for it for a long time. I love this kind of cinema. And our neighbors have been doing indie commercial mixture cinema of family drama with like theater actors or like their parallel cinema, stars for a while now. And I've watched many of those and I've really adored and loved those things. And I've used to wish कि ऐसा भी हम भी कुछ करें. So I was kind of prepared as well when it happened. अच्छा this is interesting. जब आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप अंदर से उसके बारे में सोचती हैं और उसको अपने दिमाग में डेवलप करती हैं. सारा यही तो सिर्फ काम है. यानी स्क्रिप्ट आती है and you signed on. You start thinking about it. That's your homework. For sure. Even when you're auditioning, I take a day or two to think about it first. Then I audition. I do prep for my auditions for days for sure. And acting में ज़्यादा काम जो है वो अंदर का ही है और कम काम बाहर का है और कम काम दिखाने का है. वैसे हमारा जो रुझान है वो थोड़ा है ओवर एक्टिंग की तरफ और वो करना पड़ता है एक्टर्स को क्योंकि हम हीरो ग्लोरिफिकेशन करते हैं. हम ज़्यादा हीरोइज्म पे कैरेक्टर बनाते हैं और रियल कैरेक्टर्स इतने नहीं बनाते हैं. सो इवन अ गुड एक्टर हैज़ टू डू इट बिकॉज इट्स नेसेसरी. लेकिन अगर ऐसा ना होता तो फिर ये होता कि आप कैरेक्टर को समझें एज अ रियल ह्यूमन बीइंग और उसको अपने अंदर पकने दें फॉर सम टाइम. एंड देन व्हेन ऑन सेट यू विल नो एग्जैक्टली कि क्या क्या एक्सप्रेशंस होंगे, किस लेवल पे होंगे, कितना लाउड कितना लो, और आप वो पहले से आपको पता होता है. फिर आप सेट पे आके वो नहीं करते. हाउ इंटरेस्टिंग. सेट पे तो बस आप कैरेक्टर के घर में आ गए हैं, उसके कपड़ों में आ गए हैं, तो अब आप कैरेक्टर हैं, अब आप उसमें बस जी रहे हैं.
ऐसे तो आप उसे पकने देते हैं हाँ, वेरी yeah. अच्छा। क्या कभी कभी आप गूगल भी करते हैं कि अच्छा ऐसा एक कैरेक्टर हॉलीवुड में सो एंड सो ने प्ले किया था, किस तरह प्ले किया होगा? क्या रिसर्च में ये भी शामिल होता है कि ऐसी और कहानियाँ देखना? ऐसी भी, और मेरा अपना वो है कि मुझे नॉवेल्टी पसंद है, सो आई विल वॉच शोज एंड मूवीज विच आर एज डिफरेंट फ्रॉम मी और एज डिफरेंट फ्रॉम my experience or my era or my culture as possible. So I can, you know, take on and like एब्जॉर्ब। absorb and like pick हाँ up things which are different so that कहीं काम आ जाती हैं तो फिर वो होंगी आपके अंदर already. ओके। So अब because passion भी है, तो सिर्फ ये नहीं है ना कि सिर्फ काम के लिए, because अगर सिर्फ काम के लिए होगा then it'll become a burden after some point कि कितनी movies देख लो, but passion भी है तो शौक है तो शौक है मुझे। बहुत से जो सीनियर एक्टर्स हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे कहते हैं कि आजकल के नए एक्टर्स वो तो सेट पे आते हैं, कहते हैं स्क्रिप्ट दिखा दो, मैंने क्या करना है। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो उसे शायद बर्डन की तरह लेते हैं, या ड्रामा उन्होंने में एक you're right. फैक्ट्री की तरह चर्न आउट कर रहे हैं स्टफ ड्रामों में। लेकिन ड्रामा में कभी कभार करना भी पड़ता है, बिकॉज लाइक यू गेट दैट वन पेजर राइट, आप पहले ही जिसमें आप पूरा साइनॉप्सिस पढ़ लेते साइनॉप्सिस हैं। होता है, हाँ। अब कौन से सीन कब शूट करने हैं वो हमें नहीं पता होता, ओह, सो उसकी वजह से आफ्टर अ वाइल पहले मैं बहुत कंट्रोल करना चाहती थी कि मुझे पहले से सारी स्क्रिप्ट भी मिल जाए और मुझे पता हो कौन से सीन्स कब शूट करें, मैं प्रेप करके आऊँ। फिर टाइम टाइम के साथ ये कुछ हुआ ही ऐसे नहीं होता ही नहीं है। राइट, तो फिर आप छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है आप कैरेक्टर अपना समझ लो और स्क्रिप्ट जो है वो आपको सेट पे ही मिलती है अक्सर। अच्छा, सो देन यू प्रिपेयर फॉर योर कैरेक्टर। व्हाट डू यू थिंक अभी तक लोग आपको सबसे ज़्यादा कौन से ड्रामे या कौन से कैरेक्टर से पहचानते हैं? सबसे ज़्यादा आई थिंक इज़ दिस हम प्रोजेक्ट मोहब्बत गुमशुदा मेरी, क्योंकि वो रिसेंट भी है ना वो सबसे रीसेंट ज़्यादा। है सबसे, हाँ एंड देन इट्स आल्सो झूम द जियो हाँ प्रोजेक्ट जिसमें हम हाँ। डॉक्टर्स थे, एंड आल्सो बख्तावर। सारों के नाम ले ले, ऑल योर हाँ, रिसेंट बिग तीन ये, ड्रामास है ना। हाँ या You've been in some major productions, you know, and even though it's not been leads, it's always been very well constructed character. जैसे मोहब्बत गुमशुदा मेरी में you had a whole arc, you know. तो that's there. That does it matter though? Do you want to now move from sister, cousin, good friend and become the lead? for sure. Everybody does. I Yeah, mean, I think so. Everybody would after a while, at least, if not right away. Just because you'd get this, you'd have to shoulder the responsibility of, you know, having the story and taking it forward and making it work. But it does have to be substantial. Like I would say, one of the projects that I really admired was Zindagi Gulzar Hai. उसके बाद से अब तक शायद कोई हो एक दो जो ऐसे होंगे जिसमें आपको हो कि हाँ ये काश मुझे भी मिलता तो कुछ मैं सोचती, वरना ज़्यादातर तो इतने हैं नहीं जिसमें आप बोलें कि यार काश ये मुझे मिलता। दे हैव जस्ट बीन ओके इफ नॉट बैड। जिंदगी गुलजार है तो 1 in a million था। आप Exactly, the समझे। way that girl's thoughts were and the way she would, you know, talk to Alamia in her diary and her just like, वो बहुत relatable था for me. For women especially, I हाँ, think for women too, but for me especially because I have all those questions and I, you know, think about all these things in life. वो जो injustice होता है उसके साथ, वो जो देखती है अपने around, वो सब जो feel करती है, वो बहुत relatable था। बहुत पहले के ड्रामे का नाम ले रही हूँ, लेकिन हाँ, है तो उसके बाद देखिए ना क्या कहानियाँ एक जैसी हैं, कहानियाँ एक जैसी हैं। एक जैसी हैं और उनका फोकस बस क्या लड़की की ज़िंदगी में शादी के अलावा और कुछ नहीं है जिसके बारे में वो सोचे, या एक आदमी के अलावा कोई और इंस्पिरेशन नहीं होती उसकी, कुछ और नहीं वो करना चाहती अपनी ज़िंदगी के साथ। ऐसा है नहीं, असल में चाहती हैं लड़कियां बहुत चीज़ें, ऑफ कोर्स। तो हम दिखा क्यों नहीं रहे? और आई थिंक दिखाना चाहते हैं लेकिन उसको लोग हिट नहीं वो बनाते, बिक रहा नहीं है, वो बिक ही नहीं रहा। लोग हिट बनाएंगे तो वो फिर आगे और होगा ना। अच्छा, ये तो मसला है, ये हम सबको पता है। हम सब जो ड्रामे देखते हैं, जो ड्रामों में काम करते हैं, हम सबको पता है कि ये एक मसला है कि एक कमर्शियल प्लॉट होता है और वही हिट होता है, और इसीलिए
ड्रामा मेकर्स भी एक एक्सपेरिमेंटल बनाएंगे, लेकिन वो फिर 10 ऐसे बनाएंगे जो टिपिकल होंगे, ताकि दे मेक मनी ऑब्वियसली, राइट? इट्स अ बिजनेस. Despite that, 2.5 years ago, you came into drama acting. You must have known कि ऐसे ही होती हैं कहानियाँ. What drew you towards the industry then? I studied theatre हाँ. और वो मैंने किया 3 साल नापा में. So एक तो I wanted to try another medium. दूसरा theatre is not a very lucrative, sustaining industry. हाँ, वो आपकी बस क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन को बहुत अच्छा क्वेंच करता है ना? Exactly. हाँ. तो वो भी था. You need to have a career that's consistent, that will feed you, and also because drama was it would get you exposure as well. So for people to actually get to your work, because theatre तो आप एक बार करते हैं, वो stage हो गया शायद कुछ हफ्तों के लिए, and then it's out. People did see this theatre that I did with Zia Saab, Romeo and Juliet, and I did get even some recognition from it, but it was still time bound. But with something that goes on YouTube and stays forever, it's more valid for you, right? It's an investment that's going to stay there. So people will Google you, and all the dramas that you've been part of will be there for life. हाँ, वो मेहनत एटलीस्ट जिंदा तो रह रही है ना. थिएटर तो गायब हो जाता है जो आपने किया, जिसके आपने 2-3 महीने रिहर्सल की. जबकि वो रिकॉर्ड भी करते हैं, बट वो रिकॉर्ड करके लगाते ही नहीं. मैंने तो हमेशा पूछा है कि ये रिकॉर्डिंग का क्या करेंगे, कहते हैं बस ये है हमारे पास. लेकिन यू आर राइट कि ड्रामास की स्क्रिप्ट चाहे जितनी भी ऊंची नीची चले, द थिंग इज इट गेट्स यू विजिबिलिटी. विजिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट. इज इट इम्पोर्टेंट टू कॉन्स्टेंटली बी सीन? चले कॉन्स्टेंटली नहीं, हर 2 महीने बाद किसी ड्रामे में आप नजर आए इस पॉइंट में. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. चाहे रोल ऐसे ही सा हो, इंटरेस्टिंग ना हो. नहीं, इंटरेस्टिंग तो फिर भी होना चाहिए. अगर बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो फिर आई थिंक यहाँ पे प्रिविलेज बहुत आ जाता है, जो कि आई थिंक मेरे पास भी इतना नहीं है. बट जहाँ पे जिनके पास वो होता है उनके लिए तो और भी अच्छा है. लाइक ideally, if it's not interesting, you should also wait a bit. Yes, it's important to be on the screen and be remembered, but it's also important then to have some worth, and some, like, people should wait a bit for you as well. लेकिन आप तो नई हो ना, तो waiting. मैं अपनी बात नहीं कर रही. अच्छा, generally. What about you? What's your game plan? I also take breaks though. I do. हाँ, वो जो आपने 2 महीने तक का कहा है ना, उतना मैं भी ले लेती हूँ. बस 2 महीने ही है ना? It also helps me like replicate, because मुझे भी थोड़ा time चाहिए होता है to get out of the characters and to fresh my mind. Maybe travel a bit or read books, rest, exercise, play sports. Like just get out of that 10 to 10 वाला routine. वो बहुत tiring होता है वो, especially mentally बहुत tiring होता है. तो कुछ fresh करने के लिए मेरे लिए तो important है कि यार थोड़ा सा break लूँ. And then I come with like renewed energy, sharpened, focus, all of that. अच्छा, ठीक है, सही है. अच्छा, ये बताओ, फिर भी you are one of the most visible young actresses there. एक तो 2 महीने की ब्रेक इतनी लंबी नहीं होती. You're consistently there. Also, you have now become attached to some हिट ड्रामाज जो बहुत देखे गए. बख्तावन में से एक था, झूम बहुत देखा गया, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ये सब वो हैं जो बहुत देखे गए. सो नाउ people connect with you, right? Are better roles coming your way? Or are the same kind of roles coming your way and you're getting stuck in them? No. I'm doing 2 things which I don't know if I would say they're better. Because in the end scripts वही है ना, वही story lines हैं, वही. अच्छा, different है, लेकिन क्या कि typecast हो रही हो? नहीं, typecast नहीं हो रही. I'll keep doing different things. If I'll do one negative, then I'll do one positive, then I'll do one funny, then I'll do one, silly, then I'll do one professional. Like ये है, this trajectory I've kept up. अगर सेम आते हैं मैं नहीं करती. मैं कहती हूँ मैंने अभी ये किया था, कुछ और. हाँ, जैसे मेरे ख्याल से मोहब्बत गुमशुदा मेरी में यू वर सच अ लाइकेबल एल्डर सिस्टर कि जरूर तुम्हारे पास उसके बाद आए होंगे. हाँ, बहन के सपोर्टिव सिस्टर के रोल्स आए होंगे. हाँ, आए थे, बड़ी छोटी में दोनों में. हाँ, बट नहीं, फिर मैंने नहीं किया था. अच्छा. तब फिर मेरी मूवी की शूट चल रही थी, सो आई वाज लाइक ठीक है, आई कैन टेक अ ब्रेक. नायाब. हाँ, नायाब की. अच्छा. नायाब आएगी तो फिर कुछ डिफरेंट होगा, सो आई विल टेक अ ब्रेक इन दैट सेंस. सो मैंने आई जस्ट ट्रस्टेड द यूनिवर्स एंड गॉड एंड आई शॉट नायाब, एंड देन वो ख़त्म हो गया. फिर आई
MGM की ही शूट बाकी जो थी एंड की वो की एंड देन Hmm. फिर नयाब रिलीज हो गई सो देन वो इस तरह से आई ट्राई टू लाइक मैनेज बैलेंस इट आउट हाँ अच्छा नायाब की बात करते हैं सिनेमा इज इट डिफरेंट सीइंग योरसेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन या I always wonder कि sitting there at the premiere with you guys only I always wonder कि actors को कैसे लगता होगा कि larger than life एक बड़ी screen पे आ रहे हैं yeah it's very overwhelming हाँ like so obviously because I watch movies so much there is this part of my brain which is just like critically analyzing everything acting भी shots भी सारा कुछ script भी वो चल रहा था but it was very hard for me to stay there because my emotions would take over because मैं खुद को भी देख रही हूँ I even cried मुझे पता है मूवी की एंडिंग क्या है मुझे पता था सब कुछ but I still cried so my emotions took over Nayab is the sort of movie that makes you cry I think I everybody cried but हाँ आपको तो story पता थी मुझे तो story पता थी and I was still crying there was pin drop silence towards this one part कोई कुछ नहीं कह रहा था बस खामोशी थी सब वो फिक्सेटेड थे लेकिन मैं फिर भी रोई थी एंड मुझे एंड में किसी ने पूछा भी था कि आपको कैसा लगी ये मैंने कहा मुझे तो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड ऑल दीज फीलिंग्स इन माय बॉडी लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंटेन इट ऑल तो इट्स अ surreal-ish experience yeah I'd say but I still like my brain there are things that I could also tell कि हाँ ये और अच्छा हो सकता था ये नहीं होना चाहिए था ये ऐसे वैसे चीजें वो भी चल रही थी हाँ क्रिटिकली भी तो देख रही थी ना यू वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंप्लीशन आई थिंक ऑल ऑफ यू वर वाचिंग अच्छा बट दिस वाज नॉट गोना बी योर फिल्म डेब्यू एक्चुअली असल में आपने आसमान बोलेगा में पहले हम आपको देखते हैं स्क्रीन पर कैन वी टॉक अबाउट दैट और इज इट हश हश अंटिल द मूवी कम्स It's mostly hush hush, but we can talk about like so poster में जितना reveal है I think उतना we could talk about it. You see there's an India Pakistan flag and like so yeah it's a inter country story and yeah I don't know how much I can reveal but I have a good character in it. अच्छा it's a pivotal character yeah अच्छा सही बस इतना ही बता सकती हो ना जाहिर है जब आएगी शायद फिर उसकी बात थोड़ी और करी जाए है ना yeah hopefully soon I wonder then they haven't released the trailer और said कि इस साल आएगी ईद पे आएगी थोड़ा से एक विफ मिल जाती है ना कि have you signed any other movie or drama right now are you working on a new drama or a movie yeah I'm working on a new drama not a movie not a movie and you can't talk about the drama on record it's a Ramzan play acha and it's going to be on Hum I think I can talk about it they haven't also released much of it like the name or I think they have released the name and the hashtag acha so it's called Very Filmy oh yes of course they have released it yes it's Ali Hassan's upcoming drama his last Ramzan drama did really well too of course. so yeah and it's a good character it's a smart it's a funny all of those things Ramzan drama is more fun because script ज़्यादा light hearted होती है आधे less intense oh yeah for sure intense तो हाँ they're very fun we're having a ball of a time shooting it and the script is really good too it's a Muhammad Ahmed script and his last script was kuch ankahi he knows how to create feel good stories है ना and his language has a flavor to it too एक तंज़ो मज़ाक जो है ना it's witty it is वो करने में मजा आता है इंटेलिजेंट भी होती है उनकी स्क्रिप्ट पॉलिटिकली इनकरेक्ट नहीं होती आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्क्रिप्ट के साथ क्या करती हैं इज देयर सम प्लेस दैट यू ड्रॉ द लाइन कि नहीं मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी या मैं काला जादू नहीं करूंगी ड्रामे में तो अब तक थप्पड़ नहीं मारा है काला जादू भी नहीं किया कोई कोई चीज थी जो ऑफर हुई डोंट नेम द ड्रामा कोई ऐसी चीज हुई जो ऑफर हुई एंड यू सेड कि नो I have reservations ये मैं नहीं करूँगी क्या जैसे एक सोप था या क्या सीरियल था उसमें वो जो है वो एक लड़की को भी मारने का प्लान करती है और वो उसके बच्चे को भी मारने का प्लान करती है हाँ और वो करती भी है एंड शी सीन में दिखाया है शी पुशेस द गर्ल इन द टेल एंड द गर्ल इज प्रेग्नेंट तो मैंने जब पढ़ा था मैंने कहा नहीं ये मैं नहीं कर सकती So you didn't it's one thing to do
a Huria from Bakhtavar kind of villain, and it's another thing to do this in, Yeah, you this know. is psychopathic. This is psychopathic, and like this is, I, no matter how much we deny, I've studied sociology. It's known that the media we consumes has influence over us. There are models, sociological models of different perspectives of media's influence on the human being, the psychology, our thoughts. जो आप कंज्यूम करते हैं वो कंटिन्यूसली आपके अंदर फीड हो रहा है ना, आपके सबकॉन्शियस में. एंड आप जब रात को सोचते हैं ना बैठ के, तो वो सारा कुछ आता है आपके ड्रीम्स में, आता है वो आपकी अनकॉन्शियस बिहेवियर्स में आता है वो. इट्स फैक्ट. सो पीपल नीड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द मीडिया दे कंज्यूम. And as an actor, depending on our privilege, we should also try to be mindful of what we invest ourselves in. That's how I think. Easier said than done, क्योंकि जो हाँ I agree with you, बट इसलिए easier said than done क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी हिट स्क्रिप्ट्स होती हैं अक्सर उसमें से 75% 80% ऐसी होती हैं जिनमें अजीब सी मैसेजिंग होती है, कुछ कुछ ऐसी मर्की टेरिटरी होती है और कभी कभी तो बिल्कुल और महीने में हर problematic एक होती दो है। महीने बाद हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे होते हैं रियल न्यूज़ में भी. कितने क्रूल केसेस होते हैं, अनबिलीवेबली क्रूल. डू यू थिंक रोमांस सेल्स बेटर देन एनी अदर जॉनरा इन योर एक्सपीरियंस? व्हाट्स द जॉनरा दैट सेल्स द बेस्ट इन पाकिस्तानी ड्रामास? या टेंशन वाला रोमांस. टेंशन वाला रोमांस, टॉक्सिक इन-लॉज. टॉक्सिक इन-लॉज या फिर I don't know what like हाँ, स्वीट लव स्टोरी नहीं चाहिए, टेंशन वाली भी टॉक्सिक हो तो हाँ, भी चल जाता है. हाँ. कैरेक्टर्स खुद भी, और अगर नहीं कैरेक्टर ज़्यादा टॉक्सिक हो और ज़्यादा चलता है. हाँ, चलता यही है. अच्छा, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस ऑन सेट एज अ यंग एक्टर. आपके ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. आर सीनियर्स जनरली वेरी काइंड एंड सपोर्टिव ऑफ यंग एक्टर्स, और डू यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ ओवर टाइम? Because you've worked with a lot of veterans now. Yeah, they are generally kind and supportive. अच्छा. Yeah. शुरू में होता है कि थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं, देन आप प्रूव करते हैं अपने काम से, क्या ऐसे शुरू का बताओ ना मुझे. शुरू में नहीं, शुरू में my struggle was to adapt myself from theatre to TV. अच्छा. And उस ड्रामे में भी सीनियर्स इतने नहीं थे. people were like, there were people who were older than me and people who were doing like, सबसे सीनियर उसमें समीना अहमद थी. she was very nice. बाकी एक्टर्स नॉर्मल थे, so they weren't like, you know, because they were focusing on their work. so डायरेक्टर के साथ ही फिर आप बैठ के you know चीज़ें सीख रहे होते हो to do it on TV. so हाँ, seniors are mostly very supportive. And, They are. Yeah. And there are no politics From actors? yes in the acting community? Yeah, there is अच्छा. between like your contemporaries or your I don't know like parallel leads आपके साथ जो हैं, इस तरह से है, थोड़ी बहुत तो होती है. वो क्या होती हैं? Don't name names. Yeah, people is I've been in a position शुरू में ही where an actress would try to distract me. मतलब if I'm trying to like learn my lines, they would just try to like make talk continuously, not give me space. Scene में if I'm crying, she'll try to like make me laugh to like get me out of the emotion. Yeah. Yani when the camera's on you, she'd make funny faces and No, when the camera, like, you know, we did a master and now if it's my close and like I'm just, you know, staying in that zone and they're quickly doing the right, like she would just try to like talk and laugh and I'm, you know, like ignoring it. I'm like, you know, I'm not engaging, or she wouldn't stop. So that was a bit like, shuru mein to it was because I didn't also know, and you're also vulnerable, na? You can't really like make enemies. And did you realize that she was doing this? Yeah, of course. Of course. They're like, acha, so then you had to focus more. Oof, this is so, you know, I feel like I'm hearing a school stories nahi hoti, like grade 2 tactics jo hote. Yeah. It's like that immature. Yeah. हाँ, but you can't make enemies. You can't confront and say कि ये क्या कर रही हो. Yeah. And like everybody could see it and they would all also say it behind their back, but nobody was, you know, messing, or nobody was like really saying anything or standing up to them, which is not very admirable. But it's okay because you learn.
and you get more resilient from it, and then you can also choose the kind of person you want to be on set with your co-actors, with newer people, with your seniors. How do you want to, yeah, deal with all of that? So it's a good How do you learning deal with curve. all of that? I think I've tried my best to be not just supportive, but like as an actor, also very giving. Acha. I think I've, yeah, definitely tried my best. And in fact, like there was one situation where this new actress, she's so nice. Like she could feel that she was being favored upon by the production, by the team, and she was like, you know, these guys are like being discriminatory towards you guys, and they're being too nice to me. What should I do? And I'm like, you don't worry about it. You're new. This is your first thing. You do your best. We can see that you're not the one causing it. We can see that you're just here to, you know, do your job. So nobody's holding it against you. I'm not holding it against you. Just do your best. We're here to support you. What the production, or what, you know, the And why were behind the they camera, inclined towards her particularly? uh Pata nahi. pata nahi. Not exactly the production, but the team behind the camera. They just, there's that too. There's politics from that side too. But Yeah. nothing you can't deal with. You can deal with it. Yeah, and if I can't deal with it, then I'll just distance myself from any future, you know, thing Interactions them. with that team. Yeah, Huh. yeah, Huh. yeah. Um, Because as an artist, you're vulnerable when you're trying to act. You need huh. to be understood and supported. You don't need to be given nonsense. You don't need to be discriminated against when you're trying your best. Like there's also been times where I've not even been briefed about my character while everybody else was, because Why, Noreen? I didn't choose to like kiss up Achha. to the हाँ यानी you just the came captain of to the do your project. work, extra efforts नहीं किए to network or to be extra friendly. I mean, you I know? will be friendly when it's genuine and when it's like, you know, you're organically building up to a relation, and then the project goes on and your friendship deepens with everybody and it's like real. That's fine. But otherwise, I am here to like do my job and You won't be focus on my fake about character. it, na? You won't Yeah. fake a friendship. Why should I? Why should I? हाँ you shouldn't have to. Yeah. कहते हैं फायदा होता है दोस्तियों से, सभी बताते हैं. But दोस्तियां हैं, लेकिन but काम भी तो अच्छा होना है ना. Exactly. असल चीज तो काम है. When you're good, they need you. They'll give you work. That's how it has been. हाँ, in fact, if somebody has extensive friendships across the board, but they're really ghastly on screen, Yeah. eventually people will not want to work with them. If your dad keeps calling the director every night after the shot, but you're ghastly on screen, it will still not work. मेरे सामने की ये बात है. अच्छा अब ना तुम ये सब स्टोरी सुना रही हो और मैंने तुम्हारी पूरी बिब्लियोग्राफी मेरे दिमाग. अच्छा उस ड्रामे में हुआ कि उस ट्राइंग टू गेस वेयर ऑल दिस हैपेंड. ये भी है, ये भी है. हाँ. It's not bad to be like a mentor of your friend's child. That's fine. लेकिन आपके क्लोज के बाद अगर अपना कोई क्लोज वापस करवा के अपने रिएक्शंस चेंज करना चाह रहा है, दैट्स अ बिट अनफेयर. दैट इज अनफेयर. या आपने कर लिया अपना, किसी कभी मेरा क्लोज पहले आता है, कभी आपका क्लोज पहले आता है, सही है ना. अब अगर आपका क्लोज हो गया लेकिन अब मेरे क्लोज के बाद आप इनसिक्योर होकर अपना क्लोज फिर से करवा रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर. ये भी होता है. होता है. हाँ. होता है. बट स्टिल आई थिंक देखो ये सब होता है बट यू स्टिल हियर, यू स्टिल एंजॉयिंग इट, यू आर स्टिल लुकिंग फॉर द न्यू स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट दैट एक्साइट्स यू, द कैरेक्टर्स दैट यू कैन वर्क ऑन, जो दिमाग में पका के तुम उन्हें स्क्रीन पे लाओगी. दैट मीन्स यू कैन डील विद इट. I focus on myself and my work. करना है किसी को अच्छा करते हैं, किसी को बुरा करना है वो बुरा करते हैं. They're just speaking on themselves. Everybody can see it. Everybody is an actor in the end, and actors are observant. Everybody can see who's doing what on set. Whether they say it or not, they can see it. They know when you're good, they know when you're not good. Not just as an actor, as a human being also. People can tell that. अच्छा ये मुझे बताओ कि थिएटर से जब टीवी पे आई, थिएटर पे मूवमेंट्स ही और होती हैं. यू नो, यू हैव अ स्टेज वेयर यू आर परफॉर्मिंग एंड
it's theatrical. The Yeah. movements are different, and TV is a more limited screen space, I believe. Yeah. क्या वो transition difficult होती है physically Yeah. to tune your body to a smaller screen? हाँ, वो शुरू में होती है difficult. शुरू में Did थी. you have difficulty figuring out what to do with your hands Yeah. for Yeah. TV? For Yeah? sure, for sure. ये क्या Because करती है? कुछ पकड़ लेते हैं ना ताकि वो पता ना चले. नहीं, you just have to be conscious कि यार कभी-कभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा और आप ऐसे ही खड़े हैं और उसमें comfortable हो जाएं. उसमें आप comfortable हो जाएंगे ना as a character, as an actor, तो सही लगेगा. हाँ, सही कह रही हो. हाँ, ज़रूरी नहीं है If हाथ you're हमेशा thinking कुछ about करें. it, Yeah. then the audience can tell that you are uncomfortable. Yeah. Yeah. बस मेरी ऑब्जर्वेशन में ये है कि टीवी का रिदम थोड़ा सा स्लो है because you can't be like too वो बुरा नहीं नहीं लगेगा. 35 एपिसोड तक कैसे खींचोगे? नहीं Yeah. तो So as आराम आराम से. हाँ, no, स्टोरी का भी और as an actor your movements have to be softer. अच्छा. That's what I mean. And It's cinema? Cinema same. Even Same. more internal, even more. अगर if people are liking like you know Fawad a lot or even if they're liking my character, it's because it's all inside. It's ज़रूरत भी नहीं थी तो वैसे ही नहीं किया और अंदर होता है तो लोग I don't know आपकी तरफ आते हैं. अगर बाहर फेंक रहे हैं आप तो लोग पीछे होते हैं. That's the effect that I feel it has. All right. Okay. अच्छा, tell me honestly, when you sign on to a role in TV और फिल्म, अगर उसमें बाकी की कास्ट जो है जो आपके साथ है वो इस वक्त अपने हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी पे है, क्या एक डर होता है कि लोग मेरा काम नोटिस करेंगे भी कि नहीं? नहीं, ऐसा मुझे डर नहीं हुआ. I think I was a little इतना self assured कि अगर काम और इतना ट्रस्ट भी लोगों में है और लोगों ने किया भी ना नोटिस तो अब because it's already like happened. So I don't know how to answer that as well because even though they were smaller and like you know supporting characters they did get noticed big time. Yeah. नहीं, लेकिन वो जो कहानी सुना रहा था, the director, the storyteller, it was also his work there. Because a lot of times I see that when a hugely popular actor is in a drama or a movie, the director decides to place more focus on that actor ताकि ऑडियंस खुश हो जाए, वो उसको देखने के लिए आए, वो उसे देखते रहे. तो ये भी बहुत बार होगा कि इन नायाब में नहीं हुआ बट ये होता होगा कि आपके सीन्स खा लिए जाएं because some lead actor who is at the prime of his or her popularity is gonna be drawing in the audience. तो कभी तुम्हें ये डर नहीं होता लेकिन बाकी कास्ट का सुन के कि मेरी I've स्क्रीन never सीन ना खा approached जाए? my work like that. अच्छा. I've always seen my co-actors as allies. A team. And a Yeah? team. Great. A team. That's how it should be. Yeah, and that's why even the project ends, we always ended on a good note. That's good. Like with Zara, with Anani, with Yumna, because there has to be this synergy between the people that are in that scene. And it's only if you work together that it becomes a success. एक अकेले से तो नहीं होता ना. और जब आप सपोर्ट पे हैं तो फिर आप सपोर्ट करें. आपका काम है सपोर्ट करना. आप पूरी तरह से सपोर्ट करें. और उसमें ये भी होता है कि आप अपने रिएक्शंस भी उसी तरह से दें जिस तरह से सामने वाले का रिस्पांस आपको लगता है अपनी एक्टिंग एजुकेशन में कि उस कैरेक्टर का बेस्ट रिस्पांस इस रिएक्शन पे आएगा. तो आप वही दें. Noreen, that's such a balanced way of looking at it rather than I'm saying कि sincere with कैमरा my मेरे ऊपर work. आए, मुझे देखें, बस मैं हूँ. You want कि पूरी कहानी देखी जाए. बिल्कुल. अच्छा. और मैं चाहती हूँ कि जो अगर मेरे अब ज़ारा, युमना, I respect them so much. They need to get their due. They have given their time. They have put in all that hard work. They need to get their due. And I would like that when it's my time, I you get also my get due. your due. Yes. Yeah, and then people also support me. So you have to, do as you want to be done to you. Is there anyone in your family who's also into acting? You're the first. Yeah. And yet such balanced, such a mature way of looking at it, जैसे कि It's कोई like guide कर life's philosophy. You have to apply it to every part of your life, right? You can't be like selfish in your work and then expect that life blesses you or God blesses you or universe blesses you unlimitedly. That's not how it works. Did your family have doubts कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? Should not doubts in terms of like क्या कर रही हो, but in terms of like कि ये कहाँ जाएगा? Will it become something
good enough for you to live off of it, and also is it something safe and nice to be a part of. Is it a good Because environment? हाँ Yes. उसमें उनको थे concerns के, and then I would go back and tell ना कि आज set पे ये हुआ, ऐसा था, वो था, तो अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ यूँ चीज़ें भी थी, but with time they saw that I'm growing, I'm learning, I'm able to handle it as well, and it's working out. So they were like कि हाँ तुम्हारा dream जो है वो तुमने अपने आप को अपने हिसाब से इसको किया है manage, और वो हो रहा है कुछ, so it's good. Was it always your dream? But you told me you studied sociology earlier. So Yeah. obviously dream change हुआ है तुम्हारा over time. हाँ, over time change हुआ है. हाँ. I studied sociology, I studied journalism, I kept like dabbling in different things. और फिर मैं बहुत recently 2018 की बात है कि मुझे हुआ भी कि ये मुझे interesting लग रहा है, क्योंकि मेरा interest lose हो जाता था. मैं वो चीज़ें पढ़ के करने लगती थी. जॉब की है मैंने अलग अलग चीज़ों में, सब में किया है थोड़ा थोड़ा, 6 महीने, साल, 1.5 साल. IT में मैंने सबसे लंबी देर तक काम किया, 1.5 साल इन मलेशिया जहाँ से मैं पढ़ी हूँ. बहुत मज़ा आया, लेकिन 1.5 साल के बाद नहीं आ रहा था, तो बस फिर नहीं हो रहा था मुझसे. मैंने कहा नहीं, आई नीड समथिंग दैट इज़ कंसिस्टेंटली फन, क्रिएटिव, स्टिम्युलेटिंग, intellectual, emotional, and all of that in this one package for me. I need that whole thing to be used, my entire senses to be used in my work. Okay. I don't know. It's So like it might be really suffersome for some people, but I think actors को यही चाहिए होता है. हाँ. हाँ. मसला है अंदर से. Stimulates them. हाँ. And it's not your regular job. Na? It's not 9 to 5. It's different timings, different locations, different characters. Scripts थोड़ी different नहीं होती. वो भी हो जाएंगी. Inshallah. Hopefully. Yeah. So your family doesn't have doubts anymore. They watch your dramas? My mom does. If she really mothers, likes them. Mothers tend to. हाँ. My mom does. My brother doesn't watch dramas. My dad too doesn't watch dramas at all. Did you ever watch dramas? Aside from Zindagi Gulzare, which is the drama that everybody's watched. That's the drama that attracted me to this work. हाँ, सही ड्रामा देखा. तुम कोई और सा देखती तो शायद ना आती. नहीं, हाँ, उसमें मुझे कुछ भी नहीं पता था. मैं तो अब्रॉड बैठ के अपने लैपटॉप पे बस देख रही थी, and I was like, wow, कितना अच्छी बातें कर रही है ये. ये अच्छा है. हाँ, लेकिन but then I do watch dramas like Working Women. And now you do, yeah. हाँ, now I do. तो कुछ different सी चीज़ आती है. My Grey came out also recently, which was shot like 2 years ago also. Yeah. तो वो, and I was like, even though like people like it and they're like अच्छे reviews आए हैं, मुझे देख के होता है could have done even better अगर वो अभी किया होता है, last year किया होता. Do you think you've improved as an actor? Yeah. अच्छा. तुम अपना पुराना काम देखती हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये जैसे ग्रे तुमने देखा 2 साल पहले का जो थोड़ा इनिशियल था बिल्कुल तुम्हारा, तुम्हें लगता है कि हाँ, because with time मैं और खुली हूँ, so अच्छी चीज़ें थी वो भी, like जो जितना चाहिए था कैरेक्टर्स के लिए वो तो था, लेकिन I've also like I was shy when I started. I was like new. I'm a little like not totally introverted, but I take my time with everything. You're more comfortable in front of the camera now. Yeah, probably, I'm more comfortable in front of the camera and with the people. I'm more extroverted now on sets. So over time, आपकी चीज़ change. How did you get into TV though? Did you go in for auditions constantly और इस तरह theatre experience तो तुम्हारा चल ही रहा था? Yeah. तो इसी तरह तुम TV में आई. How did you get your break? Went for auditions? After the calls, yeah, but the first call started coming जब I did a short film. It was for YouTube, produced by C Prime. Okay. It was one of their first few short films, and this one just like blew up. It was called Paying Guest. It was with Saifi Hassan and Munib Bhatt, and I was supposed to be like this this creature that kind of tries to like seduce / scare the tenant away from getting the room in our house because we don't want it. And it was an interesting premise, and I could feel, so with theatre, you do some character work in the sense कि उस character को ना थोड़ा सा आप non-humanly भी देखते हो, और इस वाले character में एक non-human चीज़ थी, कुछ metaphysical तो नहीं कहूँगी, like she was playing to be like a supernatural character in a way. And then we also do this exercise where we try to find कि इस character, इस human character का
ट्रेट एनिमल कौन सा होगा, यानी कि उसकी जो ट्रेट्स हैं वो किस एनिमल से मिलती हैं. हाउ इंटरेस्टिंग. या या तो उसमें पेइंग गेस्ट में मैंने ये चीज़ की थी. कौन से एनिमल से? स्नेक. So I had like this gliding walk that she did, and this, you know, like very slithery, very like, you know, वो वाली cunning सी चीज़ मैंने उसकी की थी. This is a theatrical exercise. It's a it's a theater exercise that our teachers would What's do your with Nayab us. character like? उसमें इसमें नहीं करने था. नहीं करना नहीं, था. उसमें नहीं करना था. I'm just thinking. How उसमें interesting. जितना आप उसको ह्यूमन रखें हाँ, और the better. उल्टा और उसकी छोटी छोटी नुआंसेस और सेंसिबिलिटीज निकालें ह्यूमन हार्ट पे और ह्यूमन माइंड पे फोकस करके, वो उतना अच्छा, तो उसके बाद से पेइंग गेस्ट के बाद से you started getting initial offers and you started auditioning. Yeah. Big ups to like Mahesh bhai from Hum TV. He offered me Safar Tamam Hua from that, and that was a very good character that he gave to me. It was also theatrical character. It was like it had a lot of fun things to it, emotional things to it. It was very good. अच्छा, ये मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आता कि why are you slotted into the older sister character when you are. But I played older sister to a girl who's actually much younger than me. Danani. Yeah, तो वो justified older था. bhabi. In Nayab. With a child who is 10. That was a film which 4, 5. I did think about it. But I was like, नहीं, ये film है. I just need to first right now show the world that I can do film acting, that I know film acting, and that I was confident कि नहीं मैं तो अच्छा सही करूँगी. किया. I think तुम रुक नहीं सकती थी just because एक mother of a young boy तुम play करती थी. It wasn't like you were super old or anything. But you know, I think अगर आपको कैरेक्टर मिले जो वेल कंस्ट्रक्टेड हो, जो इतनी आपका अच्छे शेड्स आप उसे ऐड कर सकें, how can you leave it just because you're slotted in a bhabi role? You can't do that yourself. But I do agree with you. What I need is like a character which has which is lead, and it has all of those things that I can do with it. Like I जो need that typical lead होती है margin. वो भी तो करनी है ना कभी ना कभी. अब वो तुमने नहीं की. You've done untypical characters. You know, everybody complains कि repetitive typical leads इतनी typical होती हैं, but एक बार वो भी तो करना चाहिए. I think you'll enjoy it. मुझे वो एक्टिंग इतनी बुरी लगती है. मुझे वो बहुत बुरा लगता है. तो मुझसे अपनी तरह से करो. हाँ, मुझे अपनी तरह से करने अगर दें डायरेक्टर तो मैं करूँगी. Who have you had your best experience working with? Or the project that you've had your best experience working in? Project that I've had my best experience working in. It could be because the production team was very efficient or the cast was very supportive. It could be anything. जिसकी वजह से Production team efficient हो भी या न भी हो, character से ही actor को मज़ा आता है. Production team normal भी हो या थोड़ी सी सुस्त भी हो या कोई वैसे ही कोई delays आ रहे हो, like you know. लेकिन अगर कैरेक्टर अच्छा हो तो तभी it's all worth it. तभी सिर्फ मज़ा आता है. अच्छा. It's all worth it then. Bhaktawa was fun, Joom was fun, and Nayab was a lot of fun. It's a lot of fun. Okay. I was very scared to shoot that scene with Fawad where we were having a big argument. The one shot. The one shot in the apartment? Yeah, the one shot in the apartment. Why were you scared? Because it was one take, right? And you can't make mistakes in one take. And you also can't do one takes forever because you will get tired with every take. You'll also lose the emotional freshness with every take. True. So it has to be, you should try to basically give perfect takes because even the camera team needs that space. कि उनकी भी mistakes होंगी थोड़ी. Light का मसला होता है. बिल्ली का बच्चा था. Oh my God, this story. There was this बिल्ली का बच्चा जो कि उस वन टेक में मेरे रास्ते में गुजरने के रास्ते में बार बार वहीं आके बैठता था. वो मेरे पाँव के नीचे आया है और मैंने चीख मारी एंड द प्रोड्यूसर्स वर एट द स्क्रीन एंड आई वाज लाइक इसका तो कुछ करें, क्योंकि वो 2-3 बार पहले आ चुका था और वो लॉन्ग टेक खराब कर रहा था और वो भाग भी नहीं रहा था. और वो 3 बच्चे थे उसके जिसमें से एक ये यहाँ था, 2 बाहर उन्होंने कर दिए थे. उसने उसी दिन बहुत तंग किया एंड आई वाज लाइक ये मेरे साथ कुछ हो रहा है यूनिवर्स, दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन एंड ये हो रहा है. हाँ, it was an important scene. It was an important scene. हाँ. And it was because it was one take. It was a scene that had to rehearse किया है उसके बारे में हमने बात बहुत की. Umair bhai was really pumping up. Everybody was very focused on that scene.
Are there certain scenes that you say मैं ये नहीं करूँगी ड्रामा में, या नहीं सॉरी ये तो मैं पूछ चुकी हूँ. Are there certain kinds of clothes that you refuse to wear? Is there a certain line that you draw there? या ड्रामों में ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती और फिल्म भी तुमने अभी इतनी करी नहीं है? हाँ, ड्रामा में अभी तक इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि ड्रामे दे आर ऑलरेडी लाइक मासेस के टेस्ट के हिसाब से. हाँ, they tune to what the masses want to see. हाँ. और फिल्म में भी रिसेंटली तो मैंने अच्छी फिल्म्स में कोई ऐसा वार्डरोब चॉइस नहीं देखी जिसमें जो क्वेश्चनेबल मुझे लगे. देयर ऑल जितना है हुआ वो ज़रूरत था कैरेक्टर की और वो अच्छा भी लग रहा है. तो But Noreen, you are aware that you are pursuing an acting career in a country जहाँ पे बड़े आसानी से लोग गालियाँ देने लगते हैं. आप इसके बारे में कुछ ख्याल करती हैं अपनी पर्सनल लाइफ में कि कोई तस्वीर ना ऐसी आए या कुछ मैं ऐसी तस्वीर ना लगाऊं जिससे लोगों को मसला होने लगे? मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो है ना वो ये नहीं है कि वो मौके की मुनासिबत वाली बात है. Like अगर if I am in nature, I will wear like आस्तीन खुली, I will wear like shorts and I will swim in the water and like मुझे सूरज अपने स्किन पे लगता हुआ चाहिए, मुझे मट्टी में बैठना है. लेकिन उसकी तस्वीर लगा लोगी सोशल मीडिया पे? मैंने कहीं लगाई थी and like people didn't like it और फिर मैंने नहीं लगाई and I respect that too. I think इतना ये problematic वैसे नहीं है. इससे ज़्यादा problematic ये there are people now who are getting famous because of not wearing clothes on Instagram and then they are coming in the industry. So there is then who's checking the merit there? There are people who are like debuting who have not the skills and they're just insta famous and they're insta famous for just this. They're like the clothes that sexualizing themselves, honestly objectifying themselves. And I think a woman in nature just being normal just like a man would, that's not a problem. But as a woman, for my self-respect, sexualizing myself is something that I don't consider very admirable. Where do you see yourself 5 years from now? Hollywood. Good. Dream big. Yeah. Dream big. Yeah. Who's your favorite co-actor? Like in terms of acting वाली fulfillment या वैसे ही मज़ा? दानानीर. Really? Yeah. हाँ, बहुत हमने मज़ा किया. एक तो हम इस्लामाबाद में थे, मौसम बहुत अच्छा था, वो भी बहुत चुलबुली है. कितनी खूबसूरत लोकेशन थी. वो भी आप भी बहुत चुलबुली हैं क्या? नहीं, वो भी बहुत चुलबुली है और मैं तो बिल्कुल चुलबुली नहीं हूँ. तो बाकी लोगों की तरह वो भी बहुत चुलबुली है. तो एक चुलबुला होता है और एक जो है वो थोड़ा सा लाइक जो एंजॉय करता है जो मतलब I would joke with her and then she would like get it, but then she would like get like she would like गुदगुदी me and like वो वाला था. So बहुत मजा आया था. अच्छा. And work wise it could Fawad. be Fawad was just like if I was in the shot I would just get वो ही वाइब जो एक मेरा कैरेक्टर उसके साथ है ना. ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ दिस सॉफ्ट सेंसिटिव आदमी हु सपोर्टिंग हिज सिस्टर इन द फिल्म. एंड सो आई वाज जस्ट लाइक he was living the character. He was truly thoroughly totally living the character. I could feel it. तो वो बहुत रेयर होता है. So that's why. Okay. I want to ask you about your worst co-actor to work with, but you will not tell me. You can tell me off the record later. Done. Okay. Thank you so much, Noreen. I hope all your dreams come true. I don't think a lead is as important as an important character, and you are adding a lot of color to every character that you play. So, good going and good luck with the future. Thank you so for much. Talking to me. Thank you so much. It was a pleasure.